Right. This video is mainly about open economy. ठीक है? We'll be discussing open economy, balance of payment and Mundell Fleming. Okay, basically CUET में जो जो ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको डाउट्स आ रहे होंगे वो सभी यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे. ओके, व्हाट आई टॉक अबाउट आईएस कर्व कंपेयर करेंगे. ठीक है, कि ओपन इकोनॉमी में और क्लोज्ड इकोनॉमी में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, विल टॉक अबाउट बीपी कर्व की परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होगी तब बीपी कर्व कैसा होगा, इम्परफेक्ट में कैसा होगा और नो कैपिटल मोबिलिटी में कैसा होगा. ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस. विल टॉक अबाउट मार्शल लर्नर कंडीशंस. ओके, एंड विल टॉक अबाउट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ओके, और हम अलग से चेक करेंगे व्हाट विल बी देयर इम्पैक्ट ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट जो कि बीओपी के अकाउंट्स है. ओके, लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं आईएस कर्व से. ओके, we know that IS curve gives you all combinations of interest rate and income जहां पर goods market equilibrium में होती है. ठीक है, and it is a downward sloping curve. Okay, so IS curve की में के केस में जो ये multipliers होते हैं. Okay, what's that? So in case of closed economy it is 1 upon 1 minus C plus CT, where C is the marginal propensity to consume, MPC, and this is for closed economy. And in case of open economy, this multiplier is 1 upon 1 minus C plus CT plus M, import elasticity. Okay. So that means यहां पर एक एडिशनल पॉजिटिव टर्म है एज कंपेयर टू क्लोज्ड इकोनॉमी. ठीक है, सो विच मीन्स मल्टीप्लायर जो है ओपन इकोनॉमी के केस में इट इज स्मॉलर. ठीक है, इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर इज स्मॉलर. ठीक है, विच मीन्स if there is a unit fall in the interest rate, okay, जिसकी वजह से let's say investment increase हो रही है, then it will lead to lower change in output. ठीक है, in open economy as compared to closed economy. So basically open economy के केस में the IS curve will be flatter. Okay, this is the IS curve in case of closed economy, and this is the IS curve in case of open economy. Let me show you. So let's say we are initially at this point A, okay, and interest rate is I1, and then there is a fall of interest rate to I2. So notice that क्योंकि multiplier open economy में कम है, so change in output is lesser, okay, as compared to closed economy. Why? Because simple reason is अब यहाँ पर leakage है. ठीक है, there is an additional leakage of imports. There is import leakage. ठीक है, तो क्योंकि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप कुछ अमाउंट एज ओवरऑल लेवल पर, इकोनॉमी लेवल पर, यू कैन स्पेंड सम अमाउंट ऑन इंपोर्ट्स एज वेल. ठीक है, तो देयर इज अ लीकेज, आपका आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी से मनी बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आईएस कर्व इज फ्लैटर हियर. दैट्स पॉइंट नंबर वन जो आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में सीयूटी में आपको काम आएगा. ठीक है, मूविंग ऑन करते हैं बीपी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो जैसे ही इकोनॉमी ओपन होती है यहाँ पर ट्रेड अलाउड हो जाता है एंड देर इज कैपिटल मूवमेंट एज वेल. कि लेट्स से किसी फॉरेनर ने इंडिया में कुछ स्टॉक्स खरीद लिए या फिर कुछ एसेट्स खरीद लिए. ओके, सो फॉरेन करेंसी विल कम इन आवर सिस्टम. ओके, एंड इफ वी डू द सेम थिंग देन आवर capital will move to other nation. Okay, so यहाँ पर we basically have, mainly we have two accounts which are current account and capital account. ठीक है, इसके अलावा भी सेपरेटली वी कैन टॉक अबाउट ट्रांसफर्स. ओके, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. क्या क्या बात करेंगे हम? करंट अकाउंट में वी हैव एक्सपोर्ट्स एंड वी हैव इंपोर्ट्स. यहाँ पर ये जो एक्स है वो एक्सपोर्ट गुड्स के टर्म्स में नहीं, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड एम इज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. ओके, एंड इट इज अबाउट बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. ये टोटल एक्सपोर्ट्स और टोटल इंपोर्ट्स है. ठीक है, एंड इन कैपिटल अकाउंट हम बात करते हैं कैपिटल आउटफ्लो की.
एंड कैपिटल इनफ्लो की. ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है या डेफिसिट है. ठीक है, बेसिकली इन दोनों का जो सम है, सो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. ओके, एंड अदर देन दैट वी कैन हैव कैपिटल फ्लोज. ठीक है, लेट मी, I'll be taking the symbol F for, and this is for capital. This is net capital outflows. ओके, तो अगर मैं एक्सपोर्ट को इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर रहा हूं, देन दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स. अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं. ठीक है, एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ गुड्स. इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटीज. एवरेज प्राइस है ये डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर. एंड ई इज द एक्सचेंज रेट. ओके, वी हैव इंपोर्ट्स in terms of goods. This will depend upon price in the domestic economy, income in the domestic economy, and exchange rate. Okay, so how are these related? So simple thing is, अगर आप बात करो एक्सपोर्ट्स की, so how is export related to domestic price? तो अगर डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज होता है, देन ऑब्वियसली आप एक्सपोर्ट्स रिड्यूस करोगे. यू वुड लाइक टू सेल इन योर ओन इकोनॉमी rather than selling it to the इंटरनेशनल इकोनॉमी, राइट? सो अगर यही डोमेस्टिक नेशन में ही आपको ज्यादा पैसे मिले, देन व्हाई विल यू एक्सपोर्ट मोर? ओके, सो यूल बी एक्सपोर्टिंग लेस. एंड एक्सचेंज रेट. ओके, सो उससे पहले मुझे एक्सचेंज रेट को डिफाइन करना पड़ेगा. सो एक्सचेंज रेट इज लाइक दिस, कि सपोज 1 रुपी इज इक्वल टू 0.02 डॉलर्स. ओके, एंड if 1 rupee is now equal to 0.03 डॉलर्स, ओके, सो यहां पर मेरा एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है. एंड इट बेसिकली मीन्स कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई. पहले 1 रुपी और 0.02 डॉलर्स, नाउ इट इज 0.03 डॉलर्स. तो एक्सचेंज रेट का इंक्रीज होना विल बी सेम एज अप. ऐसे रीवैल्यूएशन कहते हैं, आई विल बी कॉलिंग इट अप वैल्यूएशन. अप वैल्यूएशन ऑफ domestic currency. Okay, so that's how I will use E. Okay, so how will be exports related to exchange rate? अगर domestic currency की value increase होती है, then foreigners will not be able to afford our products. Okay, as compared to when the exchange rate was less. Okay, so again this will lead to fall in the exports. ठीक है, what about imports? इंपोर्ट्स इन वेरिएबल्स के साथ कैसे रिलेटेड है? तो यहां पर मैं नेगेटिवली रिलेटेड है ये डोमेस्टिक प्राइस के साथ, नेगेटिवली रिलेटेड है ये एक्सचेंज रेट के साथ. ओके, व्हाट अबाउट इंपोर्ट्स? डेल एम बाय डेल पी. अगर डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऑब्वियसली यूल मूव टुवर्ड्स इंपोर्ट्स, so this is positive. What about income? If income increases, then you would like to spend more on imports. Okay, so this is also positive. And what about एक्सचेंज रेट? वेल ऑब्वियसली अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे. ठीक है, बिकॉज नाउ योर डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्गर, यू विल बी एबल टू बाय मोर फ्रॉम फॉरेन. ठीक है, विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज. ओके, सो बेसिकली positively related to domestic price, positively related to income, and positively related to exchange rate. Okay, P है domestic price, and PF is the symbol that we'll use for foreign price. This will be for foreign price.
ठीक है, एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स कितने होंगे, ये एक मैंने आपको कहा था, ये एक्स है, ये गुड्स की टर्म्स में, ये जो एम है ये गुड्स की टर्म्स में। ठीक है, सो एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या होगी? सो एक्सपोर्ट्स विच डिपेंड्स अपॉन डोमेस्टिक प्राइस एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी, आपने ऑब्वियसली इसे डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो प्राइसेस है उस पर सेल किया होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, प्राइस इनटू amount of commodities that you have exported, minus imports. What will be imports? So this is the imports which depends upon P, Y and E, and इसकी वैल्यू कितनी होगी? Well, I want everything in rupee terms. So obviously import जो हुए हैं वो आपने फॉरेन के प्राइस पे किए हैं, आपने यूएस से अगर खरीदा तो यू वुड हैव पेड इट वट एवर दे हैव चार्ज यू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $2 की टी शर्ट इंपोर्ट करी है, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली प्राइस ऑफ फॉरेन कमोडिटीज, ओके, एवरेज प्राइस है वहां का। बट सिंस दिस इज इन रूपी टर्म्स एंड हम वी आर डूइंग एवरीथिंग इन डोमेस्टिक करेंसी टर्म्स, सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस पीएफ, दिस फॉरेन प्राइस इनटू डोमेस्टिक टर्म्स, ओके, विच इज व्हाट? सो अगर दो डॉलर्स की ये टी शर्ट है, देन आई नीड टू डिवाइड दिस बाय द एक्सचेंज रेट, okay, so $2 divided by 0.02, which is the exchange rate, okay, this will give me 2 upon 2 by 100, which is 2 into, which is 100, okay, basically $1 is equal to 50 rupees. So that means I'll be dividing this by exchange rate. So this will give me price in rupee terms. This will give me price of foreign commodity in rupee terms. ठीक है? So this is my net export. This is the value of net exports. Okay? Now what about capital flows? सी, कैपिटल फ्लोज रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, मोस्टली अगर आपको जज करना है तो ये डिपेंड करेगा कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कितना है एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट कितना है, ओके, एंड एफ एस, लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज कैपिटल आउटफ्लोज के लिए मैंने सिंबल लिया, दिस दीज आर कैपिटल आउटफ्लोज, ओके। तो if domestic interest rate is less than foreign interest rate, so obviously बाहर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो विल बी इन्वेस्टिंग आउटसाइड, सो देयर विल बी कैपिटल आउटफ्लोज, ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट कैपिटल फ्लाइट, योर कैपिटल विल मूव आउट ऑफ योर नेशन, ओके, दैट इज कैपिटल फ्लाइट, ठीक है। सो अगर इंटरेस्ट रेट कम है डोमेस्टिक का फॉरेन से, ओके, देन देयर विल बी कैपिटल आउटफ्लोज। तो बेसिकली अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, then outflows will also increase. So del F by del IF, ये positively related है, okay? What about the case when domestic interest rate is more than foreign interest rate? Then obviously foreigners will take interest, they will be investing more in India, ठीक है? So that means there will be capital inflows, ठीक है? So total balance of payment में क्या आएगा आपके पास? It will be net exports minus net capital outflows, okay, net capital outflows, okay, या फिर आप कह सकते हो प्लस net capital inflows, एक ही बात है, राइट, where net capital outflows is capital outflows minus capital inflows, this is capital outflows minus capital inflows, okay. So this is x minus m minus f, okay, so it is p times exports, which depends upon p and exchange rate, minus
PF डिवाइडेड बाय ई, ये हो गया प्राइस इन डोमेस्टिक टर्म्स ऑफ फॉरेन गुड्स इनटू इंपोर्ट विच डिपेंड्स अपॉन पी, वाई एंड ई, एंड माइनस नेट कैपिटल आउटफ्लोज विच डिपेंड्स अपॉन आई एंड आई एफ. ठीक है. सो अगर ये पॉजिटिव है देन देर विल बी बीओपी सरप्लस, इफ दिस इज नेगेटिव देन देर विल बी बीओपी डेफिसिट. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. देखो, वी नो दैट ये जो आपकी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इट इज y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ओके. बेसिकली अगर नेट एक्सपोर्ट्स x माइनस एम ये फॉल होंगे देन दैट विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ आई एस कर. ओके, सिंपल सी बात है. नाउ व्हाट अबाउट दिस. देखो, दो चीजें हैं आपके पास. इफ प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, इट विल लीड टू, दिस विल imply that net exports will fall. अगर डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज हो गया then in that case imports increase होंगे. Okay, so and exports will also decrease, so overall net exports will decrease. And what about increase in exchange rate? ठीक है. What if exchange rate increases? And as I told you, exchange rate increase होने का मतलब क्या है? Exchange rate increase in exchange rate basically means up valuation of domestic currency. ठीक है. रिवैल्यूएशन या अप्रिसिएट हो गई आपकी, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है डोमेस्टिक करेंसी की. सो विच बेसिकली मीन्स दैट फॉरेनर्स विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी कम हो गई. ठीक है. सो नेट एक्सपोर्ट्स, दिस विल ऑल्सो लीड टू फॉल इन नेट एक्सपोर्ट्स. ओके. तो दोनों का इम्पैक्ट जो है वो सेम है, बट किसका इम्पैक्ट ज्यादा है किसका इम्पैक्ट कम है, मैं वो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ. ओके. तो सपोज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. लेट्स से द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है एक तरह से आपके पास a 10% राइज इन प्राइस. ओके. एंड एक तरफ है आपके पास a 10% राइज इन एक्सचेंज रेट. ओके. सो दोनों का ही इम्पैक्ट सेम है. नेट एक्सपोर्ट्स कम होगा, वी हैव डिफाइंड एक्सचेंज रेट सच दैट कि उसका इंक्रीज होना है एप्रिसिएशन. ठीक है. नेट एक्सपोर्ट्स दोनों में ही कम होंगे, बट इनमें से एक का इम्पैक्ट ज्यादा है. तो बेसिकली सवाल ये है आपके लिए कि इनमें से किसका इम्पैक्ट आईएस कर्व पर ज्यादा आएगा. ठीक है. सो वी हैव दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस कर्व. ओके. लेट्स टेक ओनली वन ऑफ देम. सो दोनों का इम्पैक्ट यही है दैट आईएस कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. ओके. दिस इज IS1 and this is IS2. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. व्हेन यू कंसिडर अ राइज इन प्राइस, तो उससे जो इम्पैक्ट आएगा आईएस कर्व पर वो ज्यादा होगा. ठीक है. रीजन इज सिंपल. जो माइंडसेट होता है लोगों का व्हेन प्राइस राइजेस, ओके, सो इन जनरल व्हाट पीपल डू इज, उन्हें एक्सचेंज रेट के बारे में इतना नहीं पता होता, बट प्राइस उनके सामने इंक्रीज हो रहा है. सो इट लीड्स टू more savings. People tend to save more when prices inflation के टाइम पर. Although this is something they shouldn't do because पड़े पड़े आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन. ठीक है. बट इन जनरल पीपल डू दैट. When prices rises, savings increase हो रही है, and we know that saving is basically a leakage from the system, so that leads to a higher fall, that leads to a higher लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व. तो आईएस कर्व पर जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नेट एक्सपोर्ट्स. ओके. करते हैं बीपी कर्व एंड मंडल फ्लेमिंग मॉडल की. ठीक है. वी नो दैट बीओपी के अंदर एक तो करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है. ठीक है. सो बीपी विल बी, दिस इज एक्सपोर्ट्स. ओके. ये है एक्सपोर्ट्स इन commodity terms, okay, multiplied by the domestic price. So this is giving you the value of exports minus imports. Okay. So this is imports in terms of commodity
multiplied by foreign price divided by exchange rate, and this will give you domestic price. मतलब this will give you foreign price in terms of domestic price. ठीक है? And here you have capital outflows minus capital outflows. Okay, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड कब होगा? When net exports will be equal to capital net. This is net capital outflows. Okay, ये बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके. ठीक है. नाउ इट बेसिकली मीन्स कि जो करंट अकाउंट सरप्लस है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल अकाउंट deficit. And similarly, if I multiply both sides by a minus, then I will get current account deficit. Current account surplus के अगर आगे माइनस लगा that becomes current account deficit. It will be equal to capital account surplus. वो दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी इन बैलेंस. ठीक है. सो नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट केसेस. ठीक है. व्हेन फर्स्ट वन इज परफेक्ट कैपिटल mobility, then we have imperfect capital mobility, and then we have no capital mobility. ओके, तो इन तीनों केसेस में बीपी कर्व कैसे दिखेगा उसकी बात करते हैं. तो दैट्स हाउ द बीपी कर्व विल लुक लाइक. लेट मी टेल यू हाउ. सबसे पहली चीज, देयर इज परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी विच मींस यहां से इजीली आप बिना किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो एंड फॉरेनर्स कैन आल्सो डू द सेम इन आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी. ठीक है. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना है, ठीक है, वी नो दैट अगर foreign interest rate is greater than domestic interest rate, then that leads to capital outflows, right? Because we would like to invest in the foreign nation. Okay? And if I is less than foreign, if foreign interest rate is less than the domestic interest rate, then there will be capital inflows. Okay? And देयरफॉर अब यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के केस में व्हेन विल इट बी जीरो? वेल, व्हेन IF is exactly equal to I. Okay, so we have this, let's say foreign interest rate is here. ठीक है. When domestic interest rate is exactly equal to foreign interest rate, then in that case capital inflows will be equal to capital outflows. Okay, and then hence you get a horizontal BP curve. ठीक है. What about imperfect capital mobility? इस केस की बात करते हैं. Okay, now we know that अगर Y increase करेगा, if Y increases then that leads to increase in imports. Okay, that leads to increase in imports. Well, because of that करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा. ठीक है. तो उसको हमें ऑफसेट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से. तो फॉर दैट वी नीड टू इंक्रीज आई. ओके, सो दैट देयर विल बी कैपिटल इनफ्लोज. सो हेंस वी गेट दिस इंक्रीजिंग बीपी कर्व. ओके. क्वेश्चन इज कि हमने यहां पर ये वाई वाली चीज क्यों नहीं देखी. तो इन जनरल दिस थिंग होल्ड्स. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड. मुझे ये बीपी इक्वल टू जीरो चाहिए बैलेंस के लिए. ठीक है, ये हम वही बना रहे हैं. बीपी ये जिसकी वैल्यू है वो जीरो, वो कब होगा? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स माइनस कैपिटल आउटफ्लोस. ओके, नेट कैपिटल आउटफ्लोस जो कि डिपेंड करता है डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट पर, बेसिकली उनके डिफरेंस पर. तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फॉर दिस. दिस इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स माइनस, let's say, some k times
I minus IF. ठीक है, it is dependent upon I minus IF. ओके, बिकॉज अगर डिफरेंस होगा I और IF के बीच में, सो उसके अकॉर्डिंग आपका ये कैपिटल फ्लोज या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, राइट? सो this is I want this thing to be a zero, right? I want this thing to be zero. So zero is equal to net exports minus KI plus KIF. So KI will be equal to net exports plus KIF. Okay, so I will be equal to net exports upon net exports plus KIF divided by K. ठीक है, आप इस बात को समझते हैं. So परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का क्या मतलब? परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मींस कि अगर इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस हैं तो उसी टाइम अगर फॉरेन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो सारी की सारी कैपिटल वहां पर मूव कर जाएगी. तो बेसिकली इन दैट केस परफेक्ट कैपिटल mobility basically means that K will be equal to infinity. Okay, this thing becomes net exports upon K plus IF. Okay, now if this K is infinity, this thing becomes zero and I will be exactly equal to IF for BP to be equal to zero. That's why we are getting this horizontal line here. Okay, that's why perfect capital mobility में we get this horizontal BP curve. And if there is no capital mobility means K is equal to zero. इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, कैपिटल मोबिलिटी है ही नहीं, कैपिटल मोबाइल नहीं है, इट कैन नॉट वी कैन नॉट हैव अ मूवमेंट of capital between two nations. Okay, so that's why I will be equal to net exports upon zero plus IF. Okay, basically interest rate differences से फर्क ही नहीं पड़ता. Okay, there will be no impact of difference in interest rates. So we get this vertical BP curve. Basically means irrespective of what the interest rate is, BP curve will be independent of it because it will depend upon some Y. Okay, जिसके according वो export और imports manage होंगे. ठीक है, and accordingly we'll have some BP equal to zero here. Okay, basically it will not depend upon I anymore. Okay, that's why vertical curve. But if K is something between 0 and infinity, if K is something between 0 and infinity, I will be equal to, यानी कि imperfect capital mobility की मैं बात कर रहा हूँ, net exports divided by K plus IF. Okay, it is something between 0 and infinity. Uh, so basically now this curve, this has a positive slope. Okay, now this curve has a positive slope. ठीक है, K is neither 0 nor infinity, it is something in between. All right, so that's why this net exports, this depends somehow on income, we know that. Okay, and this 1 by K is the slope here, okay, which is something positive, hence we get a increasing BP curve. Okay, so that's how we got these three cases. Okay, all right, so in short, perfect capital mobility ये केस है जब K is infinity. Okay, no capital mobility, K is zero, and imperfect capital mobility, that means K lies between zero and infinity. ठीक है, what else? So BP curve के ऊपर in the case of perfect capital mobility, here I is greater than foreign interest rate. Okay, so which means there will be capital inflows. Okay, and that will lead to a surplus
in the this will lead to BOP surplus. Okay, and then obviously here you'll have BOP deficit. Similarly, नो कैपिटल मोबिलिटी के केस में यहां पर इंटरेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट here to the right income is more. Okay, so that will lead to more imports. Okay, so that will lead to current account deficit and hence BOP deficit. And on the left, surplus, because income will be less, so imports will be less. Okay, now here there is imperfect capital mobility. So above the BP curve, interest rate, domestic interest rate is more, so there will be capital inflows, and that will lead to current account surplus and hence BOP surplus. And below BP curve, there will be obviously BOP deficit. Okay. Now what else? So now I'll be considering the case of perfect capital mobility, और यहाँ पर हम सारे वो cases consider करेंगे कि what happens in case of monetary expansion, okay, fiscal expansion, ठीक है, fixed exchange rate और flexible exchange rate में वो सारे cases हम देखेंगे. Okay. So now understand this thing. When domestic interest rate is more than the foreign interest rate, okay, so that leads to a high demand of rupees. ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज फॉरेनर्स वांट टू इन्वेस्ट इन. ओके, तो दैट विल लीड टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में उसे कहते हैं एप्रिसिएशन. एंड इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन. ओके, so above this BP curve there will be either appreciation or revaluation depending upon कि exchange rate कौन सा है, flexible है या fixed है. flexible में appreciation और fixed में revaluation. Below this BP curve, domestic interest rate is less than foreign interest rate, so that means there is high demand for foreign currency, okay, and low demand for domestic currency, so that will lead to a fall in the value of. So that means in case of flexible exchange rate there will be depreciation. ठीक है, so below this BP curve there will be either depreciation अगर flexible exchange rate है, or there will be devaluation अगर fixed exchange rate है. Okay, so using this let's see all the cases. ठीक है, I'm considering the case of perfect capital. All right, let's start. So we can either have fixed exchange rate or flexible exchange rate. So let me start with the case where we have expansionary fiscal policy. Okay, suppose a recession में है हम and government wants to take this economy out of the recession situation, and they are using fiscal policy for that. Okay, basically expenditure को increase करना या taxes को reduce करना will lead to expansionary fiscal policy. Okay, and I'm considering here fixed exchange rate. Okay, fixed exchange rate regime है यहाँ पर. So which means that जो exchange rate में changes आएंगे we'll either call it devaluation or revaluation. ठीक है, and we are considering the case of perfect capital mobility. ठीक है, capital की perfect mobility है यहाँ पर, so BP curve will be horizontal. Okay, so BP horizontal है, ISLM curve आपके पास है यहाँ पर, and there is a expansionary fiscal policy which means my IS curve will shift to the right. Okay, so let me call it IS2. So IS curve हमारा rightward हो गया है. Okay, and which leads to, now we are at this point, let me call it E1. Okay, E1 point पर हम आ गए, and notice that at this point interest rate, domestic interest rate is higher than the foreign interest rate. Okay, so there will be capital inflows, और अगर capital inflows हुए that means there will be capital account surplus. Okay, because initially सब कुछ बैलेंस सिचुएशन में, तो आप आ जाओगे कैपिटल अकाउंट सरप्लस में. नाउ नोटिस दैट एट दिस पॉइंट income has also risen. Okay, income is more now,
पहले आप लेट से थे Y1 पर, अब आप आगे हो Y2 पर, एंड दिस लेवल ऑफ इनकम इज मोर, so that will lead to, since Y has increased, so that will lead to increase in imports. और अगर imports increase हुए, then that obviously means current account deficit. ठीक है, so there will be capital account surplus and current account deficit. Okay, now what else? Since यहाँ पर रुपी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बिकॉज कैपिटल इनफ्लोज होने, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सो नाउ इंडिया हैज बिकम द हॉट स्पॉट. ओके, एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट हियर. ओके, कैपिटल इनफ्लोज हो रहे हैं, तो रुपी की डिमांड ज्यादा है, बट यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है. वी कैन नॉट लेट द एक्सचेंज रेट चेंज. ओके, सो आरबीआई को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. एंड व्हाट विल बी दैट एक्शन? तो देयर इज अ डिमांड फॉर रुपी इन द मार्केट, तो ऑब्वियसली आपको वो मैच करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर आपको एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने से रोकना है, या फिर बेसिकली आपको एक्सचेंज रेट वापस लेकर आना है, तो आपको मार्केट में सप्लाई ऑफ रुपी इंक्रीज करनी पड़ेगी, या फिर आप कहो कि आपको डिमांड फॉर डॉलर्स रिड्यूस करना पड़ेगा. ओके, सो रुपी को अगर मार्केट में इंक्रीज करना, बेसिकली you'll have to increase the supply of rupees. Okay, so basically this leads to, तो आप रुपी को सेल कर, आरबीआई रुपी को सेल करेगी, रुपी sold will be आरबीआई will sell रुपी and buy डॉलर्स. के लिए आपका एलएम कर्व, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी ना, so there is an increase in money supply, so your LM curve will shift right. Okay, और कब तक इंक्रीज करेगा LM कर्व? जब तक आप नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना आ जाओ, which is this point here, like this. So now you are from LM1, you are at LM2, and your new equilibrium is here. अब आप E1 से मूव कर रहे हो E2 की तरफ. ठीक है, and your income is now Y3, which means जो आपकी फिस्कल पॉलिसी, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक्सटेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव. दिस पॉलिसी इज इफेक्टिव इन द सेंस कि आपकी इनकम इस एक्शन के बाद इकोनॉमी की जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज इफेक्टिव. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस. ओके, नाउ द सेकंड केस इज, नाउ वी आर अगेन इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट regime. परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, विच मींस हॉरिजॉन्टल बीपी कर्व, बट यहां पर हम यूज करने वाले एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, यानी कि एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा. लेट्स डू दैट. ये हो गया एलएम का राइटवर्ड शिफ्ट. हम LM1 से LM2 की तरफ आ गए. वी आर एट पॉइंट E1, जो कि बीपी से नीचे. यहां पर इंटरेस्ट रेट इज लेस देन द फॉरेन इंटरेस्ट रेट, विच मीन्स देयर विल बी कैपिटल आउटफ्लोज. ओके, कैपिटल आउटफ्लोज अगर हुए, तो दैट विल लीड टू कैपिटल अकाउंट सरप्लस. ये एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि इस एक्शन के बाद कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, करंट अकाउंट में क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो दिस देयर विल बी कैपिटल अकाउंट सरप्लस. ओके, और सीयूईटी में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो गया. नोटिस दैट यहां पर इनकम is more than the previously. Okay, so since income is more, so that will lead to, हमें पता है कि imports are directly related to income, so imports will increase. और अगर imports increase हो गए, तो that will lead to current account deficit. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, करंट अकाउंट में डेफिसिट हो जाएगा. ओके, नाउ यहां पर जो रुपी की डिमांड है वो गिर गई है. ठीक है, द डिमांड फॉर रुपी इज लेस, डिमांड फॉर डॉलर्स इज मोर. ओके, तो अब आपको तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखने के लिए डॉलर्स की डिमांड ज्यादा है, तो आरबीआई विल सेल डॉलर्स, और वो किसके बदले में होगा, एंड बाय रुपीज. तो बेसिकली सप्लाई ऑफ रुपीज विल रिड्यूस, तो बेसिकली मनी सप्लाई रिड्यूस होगी. तो बेसिकली आपका ये एलएम कर वापस मूव कर जाएगा LM2 से LM1 की तरफ, एंड यू विल बी बैक एट पॉइंट E. ओके, विच मींस देर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम. अल्टीमेटली आप इनकम वहीं की वहीं है, तो दैट मींस दिस पॉलिसी इज इनइफेक्टिव. ठीक है, तो यहां पर क्या क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो गया,
करंट अकाउंट में डेफिसिट हो गया, एंड अल्टीमेटली देयर इज नो चेंज इन इनकम, विच मीन दिस पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। ठीक है। एंड यहां पर क्या हुआ था, यहां पर आपका रुपी की डिमांड कम हुई, तो देयर वाज डीवैल्यूएशन हियर। ओके, प्रीवियसली इन केस वन देयर वाज रीवैल्यूएशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ये टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, रिवैल्यूएशन एंड devaluation. Okay, now moving on to the third case. Again, perfect capital mobility है यहाँ पर, so BP का will be horizontal. परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, यानी अब यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट को लेके हम टर्म्स यूज करेंगे, दे विल बी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एंड वी हैव हियर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, सो आईएस कर्व शिफ्ट टू द राइट। ठीक है, तो अब हम आईएस 1 से आ गए हैं आईएस 2 पर, एंड वी आर एट दिस पॉइंट E1. ठीक है, E1 is above the BP curve, which means foreign interest rate, domestic interest rate is more than the foreign interest rate, so there will be capital inflows, और अगर कैपिटल इनफ्लोज होंगे तो दैट मीन देयर इज कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ठीक है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन फॉरेन इंटरेस्ट रेट, so there will be capital account surplus. ठीक है, at this point income has increased, which means there will be increase in imports, and hence there is current account deficit. ठीक है, अब क्योंकि हम बीपी कर्व के ऊपर, so there is appreciation. ठीक है, रुपये की डिमांड ज्यादा है, there is appreciation. ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इस रेजीम में आरबीआई को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, रुपी की में हो गया है अप्रिसिएशन, और अगर अप्रिसिएशन हुआ दैट मींस द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, not value in the sense that now imports are expensive, imports are expensive for foreigners, imports अब एक्सपेंसिव हो गए। ठीक है, फॉरेनर्स के लिए, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके इंपोर्ट्स इज सेम एज आर एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट करेंगे वो इंपोर्ट करेंगे, उनके लिए इंपोर्ट करना महंगा हो गया, तो दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ रुपी हैज इंक्रीज्ड, so we will be importing more and exporting less, so net exports fall कर जाएंगे, so which means our IS curve will shift leftward. ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स कम हो गया, ठीक है, IS curve will shift back, तो आप E1 से वापस E की तरफ आ जाओगे, there will be no change in income, so that means this policy, फिस्कल पॉलिसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इनइफेक्टिव होती है। ठीक है, here it is ineffective. ओके, और फिस्कल पॉलिसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में इफेक्टिव थी। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ केस की। We have perfect capital mobility, which means we have a horizontal BP curve. Okay, we have flexible exchange rate regime, which means there will be either depreciation or appreciation, and we are talking about expansionary monetary policy, which means LM curve rightward shift होगा, which is possible by increasing the money supply, और यानी कि या तो CRR कम कर दो या SLR कम कर दो। Okay, so using that we can shift the LM curve, वो basically increase the money supply. Okay, so LM curve shifts right. When LM curve shifts right, we are from LM1 to LM2, and now equilibrium is from E to point E1. ठीक है, हम E1 point पर आ चुके हैं। At E1 we can clearly see that domestic interest rate is less than the foreign interest rate. Okay, which means there will be capital outflows, right? Because now India is not the hotspot, or everybody would like to invest, okay, in outside in this foreign nation.
ठीक है, so there will be capital outflows, and if there are capital outflows, then that means there will be capital account deficit. ठीक है, what else? So basically अगर हम यहाँ यूएस को कंसिडर करते हैं as the foreign nation, then the value of, since we are above, we are below this BP curve, which means there will be depreciation. ओके, डेप्रिसिएशन होगा रुपी का, ठीक है, बिकॉज वैल्यू ऑफ रुपी हैज रिड्यूस्ड, ठीक है, देयर इज मोर डिमांड फॉर डॉलर्स एज कंपेयर टू रुपी, और देयर विल बी डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, और अगर डेप्रिसिएशन हुआ रुपी का, देन दैट विल लीड टू इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स. ओके, और अगर नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए, देन दैट केस एल आई एस कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. आई एस कर्व हो गया राइटवर्ड शिफ्ट. वी हैव गॉन फ्रॉम आई एस वन टू आई एस टू, और इक्विलिब्रियम ई वन से मूव कर गई है E2 पॉइंट पर. इनकम Y से आ गई है, लेट से Y2 पर. सो आफ्टर दिस पॉलिसी, इकोनॉमी में इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज हो गया. दैट मीन्स दिस मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, दिस इज इफेक्टिव नाउ. ओके, इज इट फाइन? सो बेसिकली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम में मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव. ऑल राइट, सो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इफ यू वांट द केसेस रिलेटेड टू इंक्रीजिंग बीपी कर, ठीक है, एंड और रिलेटेड टू वर्टिकल बीपी कर्व, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड क्रिएट अनदर वीडियो जहां पर हम ये सारे केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं. ओके, दैट्स इट.